गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग क्या गुड नाइट हो गया है ना। 12 बजने वाला है। मैं सोचा यार अपनी जो परंपरा है, प्रथा है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, उसको कंटिन्यू किया जाए, है ना। तो एफओएमसी लाइव हम करते हैं हमेशा। तो देखते हैं पावल अंकल क्या बोलते हैं। ये बाकी सब तो एक्सपेक्टेड था। सीपीआई जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़ा बेटर आया। इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा कोई चेंज हुए नहीं है, मतलब कोई चेंज एक्सपेक्टेड था भी नहीं। अब पॉवेल क्या बोलता है, कब होंगे रेट कट्स वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक चीज़ खास हुई है आज, आज नहीं काफ़ी टाइम से हो रही है, पिछले कुछ हफ्तों से, वो ये कि नैस्डैक तो बहुत तेज़ बढ़ रहा है ना। इधर देखो, अगर आप, नैस्डैक 1.7% ऑलमोस्ट ऊपर है और डाउ इंडेक्स ऑलमोस्ट रेड है। तो इतना ह्यूज डेविएशन है, ह्यूज। डाउ रेड, नैस्डैक बड़ा भारी ग्रीन। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये एक चार्ट लिया है, नैस्डैक को डाउ से डिवाइड किया है और देखा इसका आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये यहीं पे आके रिवर्स कर जाता है, लगभग यहीं आके हर बार, है ना। एक लिमिट होती है कि टेक स्टॉक्स कब तक भागेंगे, डाउ तो चल नहीं रहा उतनी तेज। तो ये आरएसआई भी इसका ओवरबॉट आ गया, बड़ा रेयर इंस्टेंस होता है ये। लास्ट टाइम जून में आया था, उसके पहले ओवरबॉट यहाँ नवंबर 21 के आसपास, है ना। उसके बाद यूएस मार्केट 30% क्रैश हुए थे। ठीक है, तो ओवरबॉट अब आया है ये। और यहाँ भी आया था कोविड क्रैश के जस्ट पहले, जनवरी फरवरी 2020 में। टेक स्टॉक्स भाग रहे थे, डाउ नहीं चल रहा था, है ना। तो ये यूएस मार्केट में अपना अपने आप में एक बड़ा अलर्ट होता है कि टेक स्टॉक्स तो भाग रहे हैं और वेटेज भी उनका अच्छा है वहाँ पे, एसएनपी में भी। लेकिन डाउ इंडस्ट्रियल्स, डाउ एनर्जी, डाउ ट्रांसपोर्टेशन, जो डाउ के सेक्टर्स हैं वो नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, एसएनपी पे 6000 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। लेकिन ये कुछ सिग्नल्स हैं, मेजर इंडाइसेस हैं यार, नैस्डैक और डाउ जोन्स, है ना। तो ये, इसकी अगर हिस्ट्री देखो, ये जब जब आरएसआई ओवरबॉट में आ जाता है इसका, है ना, तो कुछ ना कुछ कांड हो जाता है अगले 3 4 6 महीने में। बस ये कि मेरी बात आप सुनो, बोलो कि यार कल मान लो मार्केट निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ गया तो अरे यार, है ना। तो कल मल के नहीं है, ये पोजिशनली है। ये चीज़ें पोजिशनली देखी जाती हैं। तो फिलहाल अपन पॉवेल की स्पीच सुनेंगे और एसएनपी लगा देते हैं अपन 1 मिनट पे। कुछ फ्री कैंडल्स तो बन रही हैं यार, 5416 की 11:30 पे बनी थी ना, वो तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया था तब, फिर रिकवर कर रहा है। ये गैप छोड़ा है इसने बड़ा तगड़ा वाला। पॉवेल बोलना शुरू करेगा मेरे ख्याल से, अभी फिल कर देगा ये गैप। ये देखो, ये भी फिल कर देगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। और आज नहीं किया तो कर देगा, कल कर देगा, इस हफ्ते कर देगा। यूएस मार्केट गैप नहीं छोड़ते, रेयर है। मेरे ख्याल से अभी अभी अगले आधा घंटे में कवर कर देगा ये, है ना। तो इसको अपन 1 मिनट पे ही कर देते हैं। कमेंट्री शुरू हो पॉवेल की तो बताना, है ना। बाकी और क्या हाल चाल है। बिटकॉइन अपना 2 ढाई% ऊपर है, कल गिरा 5% था और आज 2.5% 3% बढ़ गया, है ना। तो स्विंग्स चाहिए यार, पैसा बनना चाहिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बिटकॉइन में बने, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पोजिशनल इंट्राडे, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो स्विंग्स, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास रहेगी यूएस में, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इंडिया इलेक्शंस में आपने देख लिया धमाल, यूएस इलेक्शंस पे आप इमेजिन करो बिटकॉइन किस तरह से मूव होगा, है ना। तो मैं पिंड कमेंट में आपको लिंक भी दे रहा हूँ बिटकॉइन के लिए, गेट सेट रेडी हो जाओ भाई सब लोग, है ना। ज़रा सिंसियरली प्लेटफॉर्म से अवेयर हो जाओ, धीरे धीरे मैं भी सिखाना उस पर शुरू करूँगा।
लेकिन अकाउंट तो ओपन करके रख ही लो और रेडी रहो। ठीक है, पिंड कमेंट में लिंक है। रजविंदर कौर मैडम सब जगह होती हैं यार, मैडम की बात ही अलग है। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी बोल रहे हैं सब कुछ लोग। सही है, मैंने गुड नाइट बोल दिया, गुड इवनिंग बोलने जा रहा था आपको। गुड नाइट ही है यार, आप तो हीरो हैं सर मैं हीरो हूँ क्या? कौन सा हीरो? राहुल जी हेलो भाई। राहुल जी, अपने नाम क्या किए जी ये भी सही है। डॉग गैप फिल हो गया। ठीक है, फेड होल्ड्स रेट स्टडी। बकरे को और खिलाया जाए, खिलाओ यार, मैं तो बोल रहा हूँ खिलाओ ना यार, 24,000 25,000 ले आओ, क्या दिक्कत है? स्विंग देते रहो बस, इस तरह से जो दे रहा है ना स्विंग वो देते रहो। अब तो अपना इंडिया विक्स भी 14 आ गया है, अच्छा है ना? बना लूंगा भाई, आज अभी वेबिनार था थोड़ी देर पहले, उसमें भी लेट हो गया था थोड़ा। बनाता हूँ ना, सब धीरे धीरे करेंगे सब। लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ शुरू कर सकते, छोटी मोटी क्वांटिटी। लिक्विडेशन वाला मैंने कल स्पेशली सेशन करके बता दिया था, लिक्विडेशन मत रखना है ना, खुद ही स्टॉप लॉस लगाओ, खुद ही मैनेज करो अपनी पोजीशन। बाकी हाँ, वीडियो बनाने हैं मुझे, बिटकॉइन पे बनाऊंगा। हेलो भैया, आवाज़ तो वही है, लुक चेंज हो गया है, नाइस। भाई कुछ चीज़ें इंसान चेंज कर सकता है, हाँ, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता तो ये तो टेम्पररी, लेकिन हाँ मतलब 2 महीने में बड़ा बहुत मेहनत की है मैंने यार, मैं कहीं नहीं गया, पता कोई ट्रिप नहीं, कुछ नहीं। बहुत लोग बोलते थे चलो चलो, कुछ नहीं भाई, यहीं बैठ के रिसर्च की, वेबिनार किया, स्टडी की, बड़ी पोजीशंस बनाई, बड़े रिवॉर्ड्स लिए, है ना? मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एमटीएम देखा 4 जून को, इट वॉज ऑल वर्थ, है ना? तो सोचा अब हो गए इलेक्शन यार, थोड़ा साफ सफाई कर ले तो कर लिया ये। घर की खेती है भाई, कभी भी चेंज कर सकते हैं। बट ये लुक अच्छा है ना यार, ये बोलो ना कि लुक अच्छा है तो फिर मज़ा है। ओनली वन रेट कट इन दिस ईयर। देखो रेट कट पे इसमें पूरा समझाऊंगा मैं भी, लाइव बिटकॉइन ट्रेड करेंगे भाई। आईसीआईसीआई बैंक वीक लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक छोड़ो अभी, कल गैप अप या गैप डाउन अभी पॉवेल भैया डिसाइड करेंगे। पॉवेल की स्पीच शुरू हो गई क्या? पॉवेल की स्पीच शुरू हुई क्या? वैसे आज भाई साहब नीतीश बाबू आए नहीं चंद्रबाबू नायडू की शपथ में, है ना? समझ रहे हो आप? पॉवेल की स्पीच सुनते हो? बहुत स्लो है यार इसमें। Payroll job gains averaged 218,000 jobs per month in April and May, a pace that is still strong, but a bit below that seen in the first quarter. The unemployment rate ticked up, but remains low at 4%. Strong job creation over the past couple of years has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs to workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggests that conditions in the labor market have returned to about where they stood on the eve of the pandemic, relatively tight but not overheated. FOMC participants expect labor market strength to continue. The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.2% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past 2 years, but remains above our longer-run goal of 2%.
Total PCE prices rose 2.7% over the 12 months ending in April, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 2.8%. The Consumer Price Index, which came out this morning and tends to run higher than the PCE price index, rose 3.3% over the 12 months ending in May, and the core CPI rose 3.4%. The inflation data received earlier this year were higher than expected, though more recent monthly readings have eased somewhat. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households and businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 2.6% this year, 2.3% next year, and 2.0% in 2026. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and transportation. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. In support of these goals, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and inflation has declined over the past year, the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We've stated that we do not expect it will be appropriate to reduce the target range for the federal funds rate until we have gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. So far this year, the data have not given us that greater confidence. The most recent inflation readings have been more favorable than earlier in the year, however, and there has been modest further progress toward our inflation objective. We'll need to see more good data to bolster our confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress that we've seen on inflation. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. In our SCP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate, based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as expected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.1% at the end of this year, 4.1% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026. But these projections are not a committee plan or any kind of a decision. As the economy evolves, assessments of the appropriate policy paths will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals. If the economy remains solid and inflation persists, we're prepared to maintain the current target range for the federal funds rate as long as appropriate. If the labor market were to weaken unexpectedly, or if inflation were to fall more quickly than anticipated, we're prepared to respond. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. We'll continue to make our decisions meeting by meeting, based on the totality of the data and its implications for the outlook and the balance of risks. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. 2% बोल रहे हैं 1 साल से. Is essential to achieving maximum employment and stable prices over the long run. Our success in delivering on these goals matters. कुछ तो नया बोल दे भाई, कुछ तो नया बोल दे. Communities, families, and businesses across the country. पका दिया. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price. Thank you, and I look forward to your questions. चलो भाई, रिपोर्टर्स पूछो क्वेश्चन. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leishman, CNBC. Just wondering if you could walk me through the committee's average inflation forecast. Core PCE is now forecast to be 2.8% by the year end.
It's already 2.75, and after today's number, there were several forecasts on the street that it would be 2.6 at the end of this month. Does that tell you that the average official expects no further progress in inflation, and in fact that it's going to get worse? And if you have this long, doesn't it mean that you sort of you could have long the outlook for rates? Yes. What's going on there is that we had very low readings in the second half of last year, June through December, and we're now lapping those. So as you go through the 12-month window, a very low reading drops out, and a new reading comes in, a new reading gets into the 12-month window. So it's just a slight element of conservatism that we're assuming a certain level of incoming monthly PCE and core PCE numbers. We're assuming, good but not great numbers. And if you put that on top of where we are now, you get a very slight increase in the 12-month, reading. Now, do we have high confidence that that's right? No, it's just a kind of conservative way for forecasting things. If we were to get more readings like today's reading, that of course that wouldn't be the case. So it's just a forecasting device. I think. Let me say that we welcome today's reading and hope for more like that. But if it comes in, just to follow up, it comes in the way you forecast it, it would seem strange for you to be cutting rates at all in context of a rising core PCE. Thank you. Yeah, no, I mean, I think what we said is that we don't think it'll be appropriate to reduce rates and begin losing policy until we have more confidence that inflation is moving back to 2% on a sustainable basis. And that's the test we've applied. I don't know that this rules that in or out. I mean, really, it's a forecast, a fairly conservative forecast, month by month, that would lead to slightly higher, 12 months rates by the end of the year. If we get, better ratings than that, then you will see that come down or remain the same. If you're at 2.6, 2.7, that's a really good place to be. Nick Timros, Wall Street Journal. Chair Powell, if I look at the rate projections, I see 15 and 19 that are anticipating either one or two cuts this year, fairly evenly split between the two. And so I wonder if you could explain a little bit more the nuances of the differences there. Would 2 or 3 more inflation readings, like the one that we saw this morning, make a September interest rate cut possible? So as far as the SEP part of that is concerned, as you know, I talk to all of the participants on the FOMC every cycle. We talk about some of the economic projections and their dot plot and everything. And what I hear and see is that people are looking at a range of plausible outcomes, and in many cases they're thinking, I can't really distinguish between two of these. They're so close from these. They're very close calls, but we ask them to write down the most likely one, so they do. And I think as you've said, there's 15 of the 19 are kind of clustered around 1 or 2. So I think I would look at all of them as plausible. So I think that does tell you kind of what the committee thinks. But what everyone agrees on is it's going to be data dependent. No one brings to this or takes away from it that is on the committee a really strong commitment to a particular rate path. It's actually just their forecast and it's a combination of their forecast and their own reaction function. But again, everyone would say that this is very data dependent, and I don't hold it with high confidence. And I think if you're looking for and don't really think that they're not trying to send a strong signal that this is what I think is the right thing. It's just what they think at a given moment in time, subject to data. In terms of future meetings, we haven't, we don't make decisions about future meetings until we get there. I think in terms of what we need to see, I mentioned it earlier, we want to gain further confidence. Certainly, more good inflation readings will help with that. I'm not going to be specific about how many because really it's going to be not just the inflation readings. It's going to be the totality of the data. What's happening in the labor market? What's happening with the balance of risks? What's happening with the forecast? What's happening with growth? You look at all of that, and you ask, are we confident? Have we reached an appropriate level of confidence that inflation is moving down sustainably at 2%? Or alternatively, do we see really unexpected signs of weakness in the labor market that would call for a response?
which is another thing that could happen. But again, we don't see that. And we see today's report as progress and as building confidence, but we don't see ourselves as having the confidence that would warrant beginning to loosen policy at this time. Follow up. Did you or any of your colleagues change your interest rate projections after 8:30 or whenever you got the inflation numbers today? So this happens too often, but it does happen. It just is, a data thing. I think it happened a few meetings ago. So when that happens, when there's an important data print during the meeting, first day or second day, what we do is we make sure people remember that they have the ability to update. We tell them how to do that. And some people do, some people don't. Most people don't. And I'm not going to get into the specifics, but you have the ability to do that. So that what's in the SEP actually does reflect the data that we got today, to the extent you can, reflect it in one day. I think we'll see PPI, the PCE reading as the month goes on. But the initial CPI reading and its, kind of first level translation to PCE, we did have this morning. We were briefed about it, and people were able to consider whether they should make changes. And as I said, some people generally do, but most people generally don't. वोट करो भाई सब लोग, क्या लगता है? Bloomberg. As you noted, the labor market is now in many ways back to where it was before the pandemic. I wondered if you could comment on how officials are viewing that. So do you think that there still needs to be more cooling in the labor market to bring inflation all the way down to 2%? Or is there any sense that maybe the labor market is more vulnerable now to higher rates, now that many of those imbalances have eased? सब डाउन है. Sure. So by so many measures, the labor market was kind of overheated 2 years ago, and we've seen it gradually move back into much better balance between supply and demand. So what have we seen? We've seen labor force supply come up quite a bit through immigration and through recovering participation. That's ongoing, mostly now through the immigration channel, but still we've had some increases in prime age labor force. In terms of on the demand side, we've seen quits moving down. We've seen job openings moving down. We've seen wage increases moving from very, very high levels a couple of years ago back down to more sustainable levels. We have seen unemployment creep up now 0.6 over the course of a year or so, very, very gradually. So you put all that together, what you have is still low unemployment, still 4% unemployment, historically low. But it's moved up a little bit. It's softened a bit, and that's an important statistic. But more than that, you've got strong job creation. You have payroll jobs still coming in strong, even though there's an argument that they may be a bit overstated, but still they're strong. So that's what we see. We watch the labor market, of course, and the economy as a whole, but the labor market very carefully, and that's what we see. We see gradual cooling, gradual moving toward better balance. We're monitoring carefully for signs of something more than that, but we really don't see that. As a quick follow-up, the surveys that make up the job report are showing different tales. There's been some divergence, especially we saw in the last report that we got on Friday. पहली बार FOMC में नींद आ रही है भाई. Elections का कमाल, 4 जून का कमाल. You can't reconcile the differences. You just have to look at it and try to understand. And that's why it always makes sense to look at a series, in 3, 6, and 12 months of things rather than just one report. But you're right to point to the last report where there was job losses in the household survey, job gains, big job gains in the establishment survey. So, we're left with ambiguous results, and we have to deal with that uncertainty around data. Nonetheless, the overall picture is one of a strong and gradually cooling, gradually rebalancing labor market. Job openings, while they've come way down, are still, greater than the number of unemployed people. The jobs workers gap is still a significantly positive number, greater than it was before the pandemic. So overall, we're looking at what is still a very strong labor market, but not the superheated labor market of 2 years ago or even 1 year ago. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin with Axios.
Back on the rates path, the SEP showed a quite large shift of rate cut expectations relative to March. That's a period in which the economic data flow hasn't been that dramatic a shift. How can you provide some color on what changed in attitudes on the committee over the last 3 months to see a much shallower path of rate cuts this year? Yeah, the big thing that changed was the inflation forecast. So the inflation forecast moved up several tenths for the end of the year, and as I mentioned earlier in the what did we take away from this? We had really good inflation data in the second half of last year, then kind of a pause in progress in the first quarter. And what we took away from that was that it's probably going to take longer to get the confidence that we need ये to ज़्यादा begin सही to रिएक्ट करता है बिटकॉइन. loosen policy. So the sense of that is that rate cuts ये that लीड might take करता है place एक्चुअली. might have taken place this year, take place next year. You know, there यहाँ are तक आ fewer जाना rate चाहिए cuts in the median 68,000. this year, but there's one more next year. So you really, if you look at year end 2025 and 26, you're almost exactly where you would have been. Just it's moved later because of that progress. Now you get data, different data today. So we'll have to see where the data light the way. You know, we're at, the economy has repeatedly surprised forecasters in both directions, and today was certainly a better inflation report than almost anybody expected. And we'll set to see what the incoming data flow brings and how that affects the outlook and the balance of risks. Gina Smiley, New York Times. Thanks for taking our questions. In the summary of economic projections, the long run interest rate forecast moved up a bit. I wonder if we should read that as a sign that you think that policy is not as restrictive as we previously expected. You know, how should we interpret what that means about how the committee views its current policy setting? So two things about that. One is this. You're right, it did move up, but I want to remember to point out that long run neutral rate of interest is a long run concept. It really is a theoretical concept, can't be directly observed. And what it is the interest rate that would hold the economy at equilibrium, maximum employment, and price stability for potentially years in the future where there are no shocks. So it's a little bit, it's not something we observe today. Today we've got a very specific economy with all kinds of shocks we're still getting over from the pandemic. So it's I don't think that the concept of ours is a very important concept in economics and in what we do, but honestly, it doesn't really get you where you need to be to think about what appropriate policy is in the near term. But back to your original question, people have been gradually writing it up because I just think people are coming to the view that rates are less likely to go down to their pre-pandemic levels, which were very low by recent history measures. Now we can't really know that. That's an interesting dispute and discussion to have now. But ultimately, we think that things like the neutral rate are driven by longer run, slow moving forces, and there's a really good question about whether those really have changed or whether instead rates and the economy are experiencing a series of persistent but ultimately temporary shocks. That's been the debate, and we can't know. But in the meantime, we're making policy with the economy that we have, with the distortions that we have. And I also, to your other point, I think it is the case that as time has gone by, the question of how restrictive is policy has become one that everyone's asking, and we're asking it too. And my answer has been the policy is restrictive. The question of whether it's sufficiently restrictive is going to be one we know over time. But I think for the reasons I talked about at the last press conference and other places, I think the evidence is pretty clear that policy is restrictive and is having the effects that we would hope for. गिरेगा भैया. Just to carry that a little further, should we read this as a conclusion that the combination of tipping to one cut this year and acknowledging further progress on inflation as kind of a mark to market on the level of restrictiveness that you need, that you in fact have concluded that you weren't quite there yet? I'd be reluctant to try to draw that conclusion. I think this is about looking at the incoming data
and asking how much progress are we making on inflation and how is the rest of the economy doing? Is the labor market still strong? That's what we're thinking about. Uh, you can translate it into the language you're talking about, but to me the focus is more on we have a goal which is price stability, another goal which is maximum employment. How are we doing there? We think we've got a good, strong labor market still. We think we've been making progress toward the price stability goal, and then for a while there was a pause, and we look at today's thing and we think, well, that's a good reading, and we hope we get more like that. And in the meantime, we're asking, is our policy stance about right? And we think yes, it's about right. We're prepared to be adjusted as appropriate, but we think we're getting the things that we would want to get, broadly speaking, and that's why we've been at this policy right now for almost a year. So just to follow up on that, I think one curious thing here is you've got now this restrictive policy in place and virtually no change. बिटकॉइन तो बोल रहा भैया नीचे जाएगा तगड़ा. This year. You've got growth that stays above long-run potential throughout the प्यार forecast period. ना Unemployment that होगा never goes above सनम long-run estimate, right, of तेरी 4.2. कसम. So this isn't a story of आजकल यार slide FOMC improvement बोर inflation. कराता है So यार. where's the improvement in inflation coming from? पॉवेल कुछ That's नया lifting बोलता up ही pace नहीं so है. much in 2025. Well, it's been coming. Where's it been coming from? We'll start with that. Clearly, a lot of some of what we've been getting is just the reversal of the unwinding of the pandemic-related distortions to both supply and demand, and that's complemented by and amplified, supported by restrictive monetary policy. So those two things have been working together. We've also had a very positive supply shock on the labor side, and also you get a positive supply shock when the supply conditions unwind and return to normal. So you've had above trend potential growth and high growth, and yet you have the benefit of inflation coming down really fast actually last year, and we'll see what the rest of this year brings. So these dynamics can continue as long as they continue. I mean, ultimately the question is are you down to demand? And we don't know that though. I mean, we're look at today's report. If we see more like that, we can't know what the future holds. But in the meantime, we've made pretty good progress on inflation with our current stance. Michael McKee from Bloomberg Radio and Television. The base case in the committee seems to be that there is going to be at least one rate cut this year, but your growth forecast doesn't see any slowdown in the rest of the year, nor does the unemployment forecast see any significant weakening of the labor market. And your inflation forecasts basically average up to no change. So if at the end of the year there is no change from conditions now, why would you anticipate cutting rates? What would be the point for a rate cut? Well, we think policy ये is अच्छा restrictive, क्वेश्चन पूछा. but we think ultimately that if you just set policy at a restrictive level, eventually you will see real weakening in the economy. So that's always been the thought, is that since we raised rates this far, we've always been pointing to cuts at a certain point, not to eliminate the possibility of hikes, but no one has that as their base case. So no one on the committee does. But so that's how we think about it, and that's what we've been getting. That's what we've been getting is good progress on inflation with growth at a good level, and with a strong labor market. Now, ultimately, we think rates will have to come down to continue to support that. But so far, they haven't had to, and that's why we're watching so carefully for signs of weakness. We don't really see that. We kind of see what we wanted to see, which was gradual cooling in demand, gradual rebalancing in the labor market while we're continuing to make progress on inflation. So yeah, we're getting good results here. Well, to follow up, is there any kind of concern for the housing industry or financial stability banks in leaving rates where they are for too long at this point? On housing, the housing situation is a complicated one, and you can see that's a place where rates are really significant effect. I mean, ultimately, the best thing we can do for the housing market is to bring inflation down so that we can bring rates down, so that the housing market can continue to normalize. There will still be a national housing shortage, as there was before the pandemic. There will still be one, but the distortions that we see now with lock-ins and things like that, low mortgages. In terms of banks, the banking system has been,
solid, strong, well capitalized lending. We've seen good performance by the banks. We had the turmoil early last year, but banks have been focusing on bringing up their liquidity, bringing up their capital, and having risk management plans in place. So the banking system, seems to be in good shape. सब चंगा सी Thanks. Christopher Gaber at Associated Press. I was wondering, on inflation, if you can tell us a little more about where you see inflationary pressure in the economy. You mentioned labor markets coming into better balance, and inflation expectations appear to be well anchored. You're seeing, anecdotal stories of the large chains like Walmart and Target are announcing price cuts. McDonald's announcing a $5 meal deal. So, people may still be unhappy about prices at the grocery store. It doesn't seem like there's a lot of inflationary pressure left in this economy. I wonder if you could tell us more So about it. I think it's true that inflationary pressures have come down, but we're still getting high inflation readings. So, and I think you can see it in various places. In some parts of non-housing services, you see elevated inflation still, and that's probably could be to do with wages. Goods prices have kind of fluctuated. There's been a surprising increase in import prices on goods, which is kind of hard to understand, and we've taken some signal from that. But and of course, housing services, you're continuing to see high readings there. To some extent, that's catch up inflation from earlier pressures. But overall, you're right. Inflationary pressures have come down. As I mentioned, the labor market has come into better balance. Wages are still running, I would say, above a sustainable path, which would be that of trend inflation and trend productivity. You're still seeing wage increases moving above that. We haven't thought of wages as being the principal, cause of inflation, but at the same time, getting back to 2% inflation is likely to require return to a more sustainable level, which is somewhat below the current level of increases in the aggregate. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. There's obviously a lot of focus on how many cuts could be expected this year, but can you give us a sense of what one cut by the end of the year would actually do to the economy? What do you think would be a meaningful difference if there was a cut by the end of the year, or even two? I think if you look back in 5 or 10 years and try to pull out the significance to the U.S. economy of 125 basis point rate cut, you'd have quite a job on your hands. So that's not how we look at it. Really the whole rate path matters, and I do continue to think that when we do start to loosen policy, that will show up in a significant loosening in financial market conditions, and the market will price in what it prices in. I have no way of saying we're not at that stage, so I don't know what we'll be thinking about at that time. But it's a consequential decision for the economy, and you want to get it right. And fortunately, we have a strong economy, and we have the ability to approach this question carefully, and we will approach it carefully while we're very much keeping an eye on downside economic risks should they emerge. And you've been talking about this clear sense that it's just going to take longer to have the confidence that's needed for rate cuts. Is there something about what happened in the first couple of months of the year that you're seeing differently now with more time or hindsight? Do you still characterize it as expected bumpiness or something more lasting that is affecting your policy for the rest of the year? We always want to avoid the tendency to dismiss the parts of inflation that we don't like and just make it go away. But we had a quarter where inflation was running higher, and yes, I could stand here and say it's stuff we shouldn't have taken signal from, but it is what it is. You have to, low inflation is low inflation high. So if you have a quarter where it's higher, we tried not to take signal from the first couple of months, but we got a third month and we said, okay, the signal we're taking is that we think it's going to take longer to get confidence that inflation is moving sustainably at 2%. That's what we said. I think that was the right thing to do. I still think that's the right thing to do. Now we have today's inflation reading, which is very different, very much more positive. We're going to have to see what the trend is, what's going to be the data going forward. We're looking for something that gives us confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. And readings like today's, that's a step in the right direction. But one reading isn't. It's just
it's only one reading. You don't want to be too motivated by any single data point. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. I'm Jolene Kim with CBS News. What's your message to Americans who are seeing encouraging economic data but don't feel good about this economy? क्या क्वेश्चन वाह I don't think anyone knows the definitive answer why people are not as happy about the economy as they might be, and we don't tell people how they should think or feel about the economy. That's not our job. When people experience what they experience. All I can tell you is what the data shows, which is we've got an economy that's growing at a solid pace. We've got a very strong labor market with unemployment at 4%. It's been a long time since we've had, a long stretch of time with unemployment at below 4%. Very long time. We had a period of high inflation. Inflation has come down really significantly, and we're doing everything we can to bring that inflationary episode fully to a halt and fully restore price stability. We're confident that we'll get there. And in the meantime, it's going to be painful for people, but the ultimate pain would be a period of long period of high inflation. It is people who, lower income people at the margins of the economy who have the worst experience, who experience the most pain from inflation. So, it's for those people, for all Americans, but particularly for those people that we're doing everything we can to bring inflation back down under control. As just a quick follow-up here, you've indicated one interest rate cut sometime this year, and I know you don't have a crystal ball up there, but a lot of people are watching and see, borrowing money remains very expensive. For everybody who's out there waiting on a rate cut, about when can consumers expect some relief? Well, I don't have a precise date for you, but what we said is that we want to make sure that we're confident that inflation is actually moving back down to 2%. And when we are, then we can look at loosening policy. So having that kind of confidence that inflation will be at 2%, it just pays benefits to the whole economy, to all Americans for a long period of time. We had that period for a very long time. We very much want to get back to a place where people can not think about inflation. It's just not a concern in the everyday economic decisions that they make. We were there for a long time, and our goal is to get back to that place. And we made good progress, and we're in the phase now of just sticking with it until we get it done. Claire Jones, Financial Times. Just drawing on the change in the statement on there being modest further progress on inflation. Halfway, through the year and after today's CPI release, what have you and other committee members found that has been particularly encouraging to you? And just in terms of the conservatism, how much of that is about stickiness in shelter inflation in particular? Thank you. So encouraging has been that growth, the growth clearly that we had last year, particularly the second half of last year, and we continue to see still strong growth, solid growth this year. That's been very encouraging. If you go back a year, there was a real concern about, very much slowing growth and recession. Many forecasters had that. And that's not what happened. Instead, we got the U.S. is anyway, and it's in sharp distinction with many other advanced economies around the world. So that's been encouraging. I would say that today's inflation report is encouraging, but it comes after several reports that were not so encouraging. You asked about your second question was really about shelter inflation. So I think if you go back a couple of years, we know that there are renters, and then there are people who own their houses, and we have OER, which is owner's equivalent rent. And so when market-based rents go up sharply, as they did at the beginning of when the economy reopened, they really went up sharply. Those play into rollover rents much more slowly for existing tenants than they do for new tenants. And so we found now that there are big lags. So there's sort of a bulge of high past increases in market rents that has to get worked off, and that may take several years.
nonetheless, as long as market rents are going up at relatively low levels, and they still are, this is just going to happen, and it's just going to happen more slowly than we thought. We also do sort of this thing where we impute a rental value to owned homes, and that's many countries around the world do that. Some do it differently. It's something that the price experts have regularly looked at. It is not something that we're the only country that does, and it's not something we're looking at changing or would look at changing, any time soon. But it's true. It's one of the very hardest things in inflation and in prices is how to think about, the services that someone is getting by living in a home that they could rent, but they're actually living in it. And some countries you should just ignore that, but that's not how we do inflation here. We do it the way we do it, and we're very transparent about it. And it's true that we're seeing delays in realizing what's happening economically, but we understand that. We understand that very well. Edward Lawrence with Fox Business. Thank you for taking the question, Chair Powell. Let me go back to jobs and the consumer. The last job report showed that over the past year, 634,000 more people took multiple jobs. That's up 8.2%. And since January of 2021, we've seen prices rise 19%. So people are using their credit cards to pay for their lifestyle. What pressure points will signal to you that the slowing economy could maybe break companies in terms of hiring or break the consumer in terms of spending? So, we monitor all the things you mentioned and more. What we're seeing is basically spending was going up faster than disposable income during big parts of last year rather. And so what you'd expect to see is people spending more on their credit cards. That has been happening. Credit card balances have been going up. Credit card defaults have been going up. They're not at high levels. Remember that after the pandemic, people were cooped up. They couldn't spend money. They couldn't go out to spend money. They could spend money from home, but households were in very, very strong, historically strong financial shape. They've now worked off a lot of that. So we're watching that carefully. And what do we see? That's what we see. We see the same data that everybody else sees, but you still got household sector that's in pretty good shape. But nonetheless, it's not in the kind of shape it was in a year or two ago. We're carefully watching that. So how close then are we to that point where the consumer can't continue to spend as a spending, or companies can't hire through it there? Consumer spending is still growing. It's not growing at the pace it was growing at a year or so ago, but it's still growing solidly. And by the way, other parts of the economy are picking up. Spending on equipment and intangibles has picked up quite a bit in the wake of all the construction that we saw of new tech plants. So overall, the economy is exhibiting solid growth, and something like 2%, which is a good pace of growth for the U.S. economy. But you're right that we do see the same thing other people see, which is increasing financial pressures on more lower income people, and the best thing we can do is to foster a very strong jobs economy, which we think we have done. Ultimately, to get inflation under control, because those people experience inflation, very directly, very painfully, and once we get inflation under control, rates can come down, which will also improve things. Hi, Victoria Guida with Politico. You've mentioned that an unexpected weakening in the labor market would bring rate cuts sooner. And I was just wondering, can you talk a little bit about what that would look like? Is it more of like a quicker pace of people losing jobs? Is it more the level of the unemployment rate if it were to start to go above 4.2 or something like that? How are you thinking about what you're looking for to see the job market unexpectedly weaken? When I say unexpectedly, the first thing is more than kind of is in our forecast or in common forecasts. So something more than that. But we'll be looking at everything. The labor market, has the ability, has the tendency sometimes to weaken quickly. So waiting for that to happen is not what we're doing. We're watching very carefully. We're looking at the balance of risks. I always point out the balance of risks. So and also the fact that we look at all of the whole situation. So,
a decision to begin to, loosen policy could have several reasons associated with it at a given time. But I would just, we monitor all the labor market data, and if we saw troubling weakening more than expected, then that would be something we'd consider responding to. But we look at the broader context of what's going on too. So something like negative payroll numbers would be. I'm not gonna. I mean, I can think of things that would many things would make it on that list, but I don't think I'll butter them here. Thank you, Chair Powell. Simon Rabish with The Economist. May I ask, you mentioned with the slightly higher PC readings earlier this year, that wasn't 1 or 2 months, but 3 months that tipped you to be a bit more cautious in the rate outlook. Should we take from that, it looks like May will be quite good for PC as it was for CPI. Does that imply that kind of 2 more good months would reinstill confidence that rate cuts could be coming sooner than you currently project? I don't actually have that kind of mechanical thing in my thinking. I get that, as many good ones as we had bad ones, but it's not like that. It's going to be the totality of the data. The labor market data, the growth data, in terms of inflation, you'd want to see real progress that builds your confidence that we are on a path down to 2%. And I don't want to try to give you specific numbers and things, because that points to dates, and I just don't think we're not at a point of being able to do that. Thank you for doing this. I'm Kosuke Takami with Nikkei. I would like to know about the impact of stronger dollar on U.S. economic growth and prices. And I have no doubt that the market should determine the exchange rate, but Japan and some emerging market are suffering from strong dollar. So I want to know if it is having a positive impact on U.S. economy in total. Thank you. So we don't. कौन सी भाषा बोल दी बस ने? Finance Ministry, the Treasury Department, has responsibility for thinking about and if it sees fit, doing things about the level of the dollar. So for us, it's just another financial variable. And you're right, the dollar has exhibited some strength over the course of the last year or so because the U.S. economy is very strong. We don't think of it as benefiting or hurting the U.S. We don't manage the level of the dollar. That's not our job. It's not, for our economy, what we're trying to foster is maximum employment and price stability. And we feel like we made good progress on both of those goals over the course of the past year. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said you would cut rates before inflation falls to 2%. You're forecasting inflation to end the year at 2.8% on core PCE. We're at 2.8%, of course, on core PCE. Right now, you said the inflation forecast is conservative, and that if you got 2.6 to 2.7 on PCE, that would be a good place to be. You also indicated the job market has mostly normalized. So why cut rates this summer just once? You're well above neutral, to try to preserve the soft landing rather than risking waiting too long in the quest for confidence for inflation. So we're well aware of the two-sided risks here. Let me just say, we understand that if we wait too long, that could come at the cost of economic activity, of employment, of the expansion. We understand that if we move too quickly, we could end up undoing a lot of the good that we've done and have to then start over, and it could be very disruptive. So we're extremely aware of both of those risks and just basically trying to manage them. And what we said is that we don't think it will be appropriate to begin to loosen policy until we're more confident that inflation is moving down to 2% over time on a sustainable basis. That's kind of been our test. Or there's another test, which is unexpected deterioration in labor market conditions. So I think that's the right way for us to think about it. That's our dual mandate there, and we have a strong economy. We've got growth. All forecasts are very commonly around 2%. That's a strong growth rate for our economy. The labor market continues to print jobs at a pretty high rate. Unemployment's still low, so we have the ability now to
approach this question carefully. And that's what we're doing. So just to follow Chair Powell, do you need to be ahead of a weakening in the labor market? Otherwise, is it too late, given that the labor market is a lagging indicator, right, when you look at the monthly jobs data? Yeah, we completely understand that that's the risk, and that's not our point, is to wait for things to break and then try to fix them. We're trying to balance these two goals in a way that is consistent with our framework, and we think we're doing it. Thank you, Chair Powell. Evan Reiser with Market News International. You have mentioned before the framework review process will start in the latter half of the year. At this point, do you have any specific time frame for the start of that? Who will lead it? Will it be you or a committee group of your peers? What will be the parameters? Do you anticipate the review will consider changes to communications going forward? So what we've been thinking is that we would announce and commence the review later or late in the year. In the meantime, as that time approaches, we will be devoting a lot of careful thought and planning to the contours of it. Within scope would certainly be communications generally. I'm not going to say that we'll look at this or that particular thing, and all the other details. We don't want to get prematurely into a conversation until it's really time to have it. And so, I'm going to leave pretty much everything else to later in the year. Good, Nancy, the last question. चलो भाई बिटकॉइन रेजिस्टेंस के पास है कॉल राइटिंग का ट्रेड लिया जाए. Can we still cut rates with shelter prices high, or will you wait until they start to moderate a bit? I wouldn't. There isn't any one variable like housing prices moderating that would really decide against what we're doing. We've got an overall test, which is greater confidence that inflation is moving down to 2% on a sustainable basis. That's our test. 450. Alternatively, we see unexpected weakening in the labor market. So those are two different tests. I would say, we're not looking at any one price in any one sector and saying that's the one. We don't target housing prices, for example. We target wages. We target aggregate prices and overall employment. So. But if housing prices remain sticky, could that slow down the pace of rate cuts? I think you'd look at we'd be looking at the aggregate numbers and asking ourselves what's going on here with inflation at the aggregate level. And of course, if any price that contributed to ongoing inflation would matter. Any price that contributed to ongoing disinflation would matter too. But I wouldn't single out housing as having a special role. Thank you very much. The chairman of the Federal Reserve, Jerome Powell, wrapping up the June Fed decision. No change at the Federal Reserve to interest rates. Plenty of changes in the forecast. Inflation moving up a little bit. The dot plot moving down a little bit. Equity markets just about holding on to gains and still near all-time highs on the S&P 500. On Nasdaq, we're still high by 1.8%. Up by 2.2. Return the paper बेच दिया 69,200 का. Things start to get interesting. Yields were down by double digits at the front end. बाय कर लिया 70,000. We're now down by only 9 on a 2-year at 474.55. And if you take an intraday chart, पोस्ट कर दिया ये बिटकॉइन this shows the ग्रुप story of the morning and the afternoon perfectly. I want to show you 3 moves. The first move was 8:30 Eastern time this morning when CPI came out cooler than expected. What you see in yields drop. Easy to see. On the far right side of the chart, 2 moves I want to point out. One's at 2 p.m. Another is in the news conference. At 2 p.m, we had some forecasts. The dot plot came out, and we all wanted to know where the median dot would be. In March, it signaled, or at least implied, 3 cuts for 2024. That came down to what? Yields started to climb. And then we all had a big question going into the news conference. Well, hang on a minute. Did they factor in the inflation report that came out this morning? And obviously, inevitably, Chairman Powell was asked about it. This is what he had to say. What's in the SEP actually does reflect the data that we got today, to the extent you can, reflect it in one way. I think we'll see PPI tomorrow, the PCE reading as the month goes on. But सही एंट्री मारी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर देखते हैं.
to PCE. We जीरो did हो have जाए this कल money और move क्या to a brief, कुछ and people were able to consider whether they should make changes. And it didn't look like many people made any changes, Lisa. And for that reason, that's why you see that spike high, that little move high, again on a 2-year yield. Cue the confusion around the forecasts. Well, is this by design in some levels? Basically, there were a number of Fed officials who got that CPI print and opted not to change their inflation forecast. Did they do so because they want more than 3 inflation reads to really gain confidence in some sort of disinflationary trend? Is it because all things being equal, it's better to send a hawkish signal to markets that are eagerly looking for any opening to buy into any idea of a rate cut? All we know is that was a slight disappointment that's being reflected in slightly higher yields that have taken back about 5 basis points from earlier this morning. There's always going to be a big conversation about where the median dot is. But when these numbers came out, you were the first to point this out. The split amongst the policymakers elsewhere. TK, just to go through this again, for those of you just joining us, this is what we saw. Get away from the median. On the committee right now, the dot plot shows 4 policymakers who saw no cuts क्या this बात है year. मेरी कॉल राइटिंग का Anticipated just इंतजार one कर रहा था reduction. बिटकॉइन That was 7. Expected some 2 cuts. It's kind of all over the place. Yeah, they're bifurcated. And what's important here is the dispersion is not smaller. It's like basically बस ये लो two तोड़ hands दे up हो on गया the फ्री column. फॉल A lot of people have a इसके wonderful नीचे आ tweet जाए out बस that's really pointing out the polarity that we see in the Fed as we stagger through the summer. Kathy Jones and Charles Schwab is with us now to weigh in on some of सीधा what we heard in the news सी conference टू and what we हंड्रेड यहीं saw रुकेगा in the release at 2 p.m. Eastern Time. Kathy, your thoughts on this one, please. ये प्यार ना होगा तुमसे अरे कैती को क्यों सुन रहे हैं यार अपन कैती चलो भैया टाटा बाय बाय यार 272. But it's 2 इंडिया में 1 बजने वाला है हाँ तो भाई लोग कितने उल्लू जाग रहे हैं अभी मेरे साथ साथ कितने उल्लू जाग रहे हैं काफ़ी सारे 100 से ज़्यादा 100 अभी भी हैं गुड यार चलो अच्छी बात है यार 2% पड़ा हुआ है भाई ये है ना मान ही नहीं रहा बोल रहा है जब कुछ कांड होगा तभी करेंगे रेट कट नहीं तो नहीं करेंगे सीधी बात बोल रहा है अब देखो भाई पॉइंट ये बड़ा सिंपल सा है बीमारियां होती ना तरह तरह की कुछ बीमारी होती है जो इंस्टेंट शॉक देती है और इंसान निपट जाता है ठीक है अटैक आ गया है ना या कुछ बड़ी भारी बीमारी मतलब कुछ बुखार तेज़ वाला है ना क्या क्या होते हैं जो भी जिनसे निपट जाता है इंसान एक तो वो होती हैं और दूसरी कुछ बीमारियां होती हैं जो स्लोली स्लोली ख़त्म करती हैं अंदर से है ना कैंसर हुआ और टीबी हुआ डायबिटीज़ हुआ ये धीरे धीरे ख़त्म करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट उस तरह की स्लो बीमारी है ठीक है जो अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है अब बाहर से समझ में नहीं आता बाहर से बढ़िया इकोनॉमी बढ़िया चल रही लेबर मार्केट टनाटन एकदम ये सब है ना रिपोर्टर्स क्वेश्चन अगर आपने सुने हो पॉवेल अंकल लेकिन बोल रहे हैं कि भैया हम तो जब तक कांड नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे क्रेडिट कट तो अब भाई कुछ नहीं कर सकते जब कांड होगा तब होगा कुछ है ना लेकिन वेट कर रहे हैं भाई सब बोल रहे हैं वेट कर रहे हैं कहीं कुछ ऊंच नीच हो अनएम्प्लॉयमेंट बड़े कुछ एक्शन लेने लायक चीज़ हो तब करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे है ना नहीं तो एक रेट कट जब साल शुरू हुआ था तब बोले थे हम 6 रेट कट करेंगे फिर मार्च आते आते बोले 4 करेंगे फिर अब 1 पर आ गए आधा साल निकल गया है ना तो सीधी बात है मैंने पिछले साल ही बोला था जब तक कहीं कोई बैंकरप्सी फाइल नहीं होगी कोई कंपनी दिवालिया नहीं हो जाएगी कोई बैंक नहीं डूब जाएगा जब तक इस तरह कुछ कांड नहीं हुआ तब तक रेट कट नहीं होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है अनएम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक क्रैश तो चीखो ही मत कोई फ़ायदे नहीं है यूएस गिरने लगा है ना पॉवेल अंकल के जाते सी वाह बस ये तोड़ दे भाई ये तोड़ दे फिर नीचे नीचे का ही है फिर तो नीचे मैदान खुला है ये गैप फिल कर दो आज ही 5376 का बस तो कल निफ्टी की धमाकेदार एक्सपायरी हो जाएगी कितना 30-40 पॉइंट दूरी तो है 1% भी नहीं आ जाओ 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 आए हाय बिटकॉइन कर रहा हो डांडिया
ये तो अलग ही चाल चलता है भाई, है ना। मुझे तो इसमें ट्रेडिंग मज़ा आता है बिटकॉइन में। कितने लोग हो भाई जो ट्रेडिंग शुरू कर दी बिटकॉइन में और मज़ा ले रहे हो? हैरी बेंट इकोनॉमिस्ट सेज S&P 86% क्रैश करेगा 2025 में। भाई हैरी बेंट 2021 से बोल रहा है ना। 2021 से बोल रहा है 80%, 90%, एक में शायद 95% भी बोल दिया था। इकोनॉमिस्ट अगर सही हो जाते हैं मार्केट में तो भाई सबसे अमीर वही होते हैं ना। सबसे ज़्यादा गलत इकोनॉमिस्ट ही होते हैं। बस एक चीज़ है उनके साथ अच्छी बात कि जब वो सही होते हैं ना तो इतना खतरनाक सही होता है ना कि पैसा गिनना मुश्किल हो जाता है। एनवीडिया स्प्लिट, ओके। एनवीडिया 98% गिरेगा? मुझे तो नहीं लगता एनवीडिया 98% गिरेगा भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और आने वाला है। एनवीडिया गिरेगा तो सही, बबल में है, लेकिन 98% यार कोई आरकॉम है क्या? है कुछ भी, बस कुछ भी फेंको हम लपेट लेंगे। हमारी तो आदत होगी लपेटने की 2014 से। रसल 2004 ओवर हेड एंड शोल्डर समथिंग इज कमिंग, चार्ट्स आर टेलिंग द स्टोरी। ऐसा है क्या भाई? चलो भाई रसल का चार्ट देख लेते हैं। यार बढ़िया गिर रहा है यार, है ना। मैं डिस्टर्ब नहीं है, सुपरस्टिशियस, जो जहाँ बैठा वहीं बैठे रहो, हिलना मत, है ना। अगर लेफ्ट साइड लेट के देख रहे हो मोबाइल ऐसा टिका के, तो राइट साइड नहीं लेना करवट, है ना, लेफ्ट साइड ही रहना। लेटे तो कम से कम। यहाँ देखो तो कहाँ है अपन, इस विंडो में खोल लेते हैं अपन। नहीं यार इस विंडो में एडवांस सेटअप है मेरे। अरे यार, अरे यार चलो यार, सुपरस्टिशंस नहीं बनते अपन। रसल 2000 क्या बोला, 4 ओवर में हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कैंडल की जगह लगा दो लाइन चार्ट। भाई मुझे तो इसमें ना हेड दिख रहा ना शोल्डर दिख रहा यार, सही बोलूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर आप इन दोनों को शोल्डर बोल रहे हो, ये हेड, तो ये अजीब सा इंसान हो गया। ये हेड ऊपर होता है मेरे भाई, है ना। तो कुछ गलत रीड कर लिया आपने। हंस हंस के सहेंगे हम, कितने भी तो कर लस तुम्हारे। ये तो आई गया रे, क्या सही पॉइंट पे कॉल राइटिंग की। देखो आप लाइव लाइव है ना, मतलब अरे यार भाई स्टेडर की बात ही अलग है यार, है। खुद से खुद की तारीफ कर रहे हैं, मज़ा ही अलग है। लॉलीपॉप देख के टपकेगा कल, देखते हैं। इंडियन मार्केट भागेगा कल, ठीक है भैया। भाई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। 17,000 से 1.3 लाख 215 के ओवर ट्रेड। भाई जिस तरह से जाता है आता है ना, उसी तरह से चला जाता है। 17,000 वगैरह से ट्रेडिंग नहीं होती ना। ट्रेडिंग बड़ी मछलियों का खेल है, या तो बड़ी मछली बन के आओ, नहीं तो छोटी मछली बनोगे, मार दिए जाओगे। 17,000 से बड़ा बनने की कोशिश कर रहे थे, पॉसिबल है क्या? फंडे ही गलत है ना। दिस कंपटीशन मिस वर्ल्ड आई, मिस वर्ल्ड ना हेड ना शोल्डर, सही बात है भाई, सही बात है। चलो देखते हैं ज़रा 10-15 मिनट और, जिस हिसाब से गिर रहा है मज़ा तो आ रहा है। हंस हंस के सहेंगे हम, कितने भी तो कर ले सितम। लेकिन आज अगर डे लो क्लोज होते हैं ना तो कल फिर पिटाई होगी, है ना। एफओएमसी के बाद एक ट्रेंड पकड़ता है मार्केट बहुत तेज। नेस्डेक नहीं हिल रहा ज़्यादा कुछ। स्टॉक्स देखें यार क्या हो रहा है स्टॉक्स में। गोल्ड, गोल्ड में क्या सीन है भाई, गोल्ड भी नीचे आ रहा है। यील्ड्स देखें भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो यील्ड्स है। यील्ड्स रिकवर कर रहे हैं भाई, गजब। मार्केट मतलब मार्केट ये बोल रहा है, बॉन्ड मार्केट, कि पॉवेल अंकल चोमू बना के निकल लिए, है ना।
बॉन्ड मार्केट तो यही बोल रहा है, बोल रहे इन्फ्लेशन कंट्रोल में, यील्ड बढ़ रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे लाखों करोड़ चल रहा है खेल, है ना, लाखों करोड़ का। तो ये बोल रहे हैं, ये जो अभी हुआ ना पिछले कुछ मिनट में, ये चार्ट बोल रहा है पॉवेल अंकल चोंग बना के निकल लिए। यहाँ लाखों करोड़ जो हैंडल कर रहे हैं वो बोल रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, है ना, यील्ड्स बढ़ रही हैं, इसका मतलब यही है। शॉर्ट टर्म बुलिश बोला जाता है इसे, लॉन्ग टर्म बियरिश, है ना। बाकी देखते हैं तो और सब तो ठीक ही है, सब वैसे ही है। ज़रा अपन यील्ड कर्व और देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है। यहाँ मेजर स्टॉक तो सब ग्रीन है। नैस्डैक इन्होंने ही भगाया भाई मार्केट्स, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एनवीडिया, बाकी सब फ्लैटिश ही हैं, कुछ खास नहीं है। यील्ड कर्व वहीं का वहीं है, कुछ नहीं है। चेन के वाई टीएलटी कुछ दिनों से काफ़ी नीचे आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, चेन के वाई टीएलटी, पता है ना आप लोगों को। JNKYTLT, इसको ज़रा वीकली पर देखते हैं, इस पर ज़्यादा अच्छी तस्वीर दिखेगी। ये देखो नीचे आना शुरू कर दिया इसने बिल्कुल यहाँ से। लास्ट टाइम जब भी अपने हाईज लगाता है ना ये, देखो आप कितना परफेक्ट कोरिलेशन दिखेगा आपको, मज़ा आ जाएगा। ये हाईज थे यहाँ पर, ये हाईज थे यहाँ पर, है ना। और ज़रा पुराने हाईज देखते हैं इसके। ये तो खैर कोविड वाली रैली थी, इसको छोड़ देते हैं। हाँ स्विंग हाइस देख रहे हैं, स्विंग हाइस ये भी ले सकते हैं। ये जैसे बाउंस लिया ना ये वाले हाइस, और ये भी ले सकते हैं। इसके हाइस देखो आप, है ना, और देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो सारे नहीं ले रहे, मोटा मोटा ही लेते हैं। 2008 तक चला गया। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। अरे कंपैरिजन, तुम देखो यहाँ पे गिरा, ये इसके स्विंग हाई जेन के बाई टीएलटी, एसएनपी गिरा, फिर ये स्विंग हाई जेन के बाई टीएलटी का एसएनपी गिरा, है ना। यहाँ पे छोटा सा डिप दिया एक, ज़्यादा नहीं गिरा। यहाँ पे बहुत तेज गिरा एसएनपी, है ना। ये इसका स्विंग हाई जेन के बाई टीएलटी का बहुत तेज गिरा, है ना। यहाँ पर देखें तो इंस्टेंटली तो नहीं गिरा, दिसंबर 2019 में टॉप लगाया था, मार्केट गिरना शुरू हुआ फरवरी से, 2 महीने बाद। ठीक है, ये तो मनी प्रिंटिंग वाला दौर था, तो इसमें तो कुछ भी नहीं गिरा था, सब बढ़ ही रहा था। फिर यहाँ ये स्विंग आई था मई 2022 में गिरा, फिर अक्टूबर 2022 से एक छोटा मोटा डिप आया इधर, ये यहाँ तो उल्टा हो गया, ये गिरा, ये उल्टा बढ़ गया। एक एक्सेप्शन हमको मिला है, बाकी तो ये जब भी हाई लगा रहा है 2 महीने के बाद मार्केट गिर जाता है, या तो इमीडिएटली या 2 महीने बाद। तो अभी जिसने हाई लगाया चेन के भाई टीएलटी ने, वो लगाया है अप्रैल, 22 अप्रैल, अप्रैल मई जून, 22 जून, जून में खेला हो सकता है भाई, क्या लगता है। आज क्लोजिंग डे लो टाइप्स हो जाए, कुछ हो सकता है, शुरू हो जाए, एफओएमसी ट्रिगर है ही, है ना। चलो भाई ताम झाम हटाते हैं ये। बिटकॉइन देखने का मजा लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ती हैं बस, ये और तोड़ दे फिर फ्री फॉल है।
68,200 और तोड़ा ना अगर, गया ये रेड में आ जाएगा, और कल सुबह तक 4-5% डाउन। डॉलर गिरा है, ओके, डॉलर गिरा है, डॉलर गिरा है तो फिर इमर्जिंग मार्केट शायद उतना ना गिरे, डॉलर गिरा है, ठीक है, ओके। 1 बज गया, सो जाओ भाई। हाँ यार, नींद तो बहुत आ रही है। टाटा स्टील वगैरह भी कल बात करेंगे भाई। ब्रदर इज बिजी इन हिज वर्क, हाँ यार बिजी तो है ही। मुझे लग रहा बजट तक भी हेक्टिक ही रहेगा मेरा शेड्यूल। आज वेबिनार था, वेबिनार में एक बात हुई कि बजट का भी वेबिनार करो एक। तो बजट का भी इनफैक्ट काफ़ी लोगों का मेल आया, सर कोई और वेबिनार, कुछ भी वेबिनार, मज़ा आ गया लोगों को। बिटकॉइन का वेबिनार करो, ऑप्शन राइटिंग का वेबिनार करो, और बजट का वेबिनार करो, तो करेंगे भाई, है ना, वेबिनार कर लेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में। ये देखो गया, एज लॉन्ग एज आप लोग पैसा बना रहे हो ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो 91% लोगों ने वोट किया था भाई, वेबिनार वालों ने। लर्निंग प्लस अर्निंग, ओहो, ओहो, है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ पे वेबिनार वाले तो सब कर ही लेंगे ज्वाइन। यहाँ पे कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हों वेबिनार में, कमेंट करके बताओ, करें क्या भाई, और कौन से टॉपिक पे करें, ऑप्शन राइटिंग, बिटकॉइन, या फिर बजट, या फिर तीनों। बजट का करना है, जल्दी करना पड़ेगा, कि बाद में प्रीमियम्स चले जाते हैं, जो प्रीमियम मिलते हैं ना अभी। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया, हाँ तोड़ दिया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने इसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। भैया रेड में दिख रहा मुझे ये क्लोजिंग होते होते तक, जिस इंटेंसिटी से गिर रहा है ना। और अपना यूएस का है, और अपना गिफ्ट निफ्टी के क्या हाल चाल, ये भी लोस के आसपास ही। मेन तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जेन के वाई टीएलटी और अपने ईल्ड्स, ईल्ड्स बढ़ रहे हैं क्या, और बढ़ रहे हैं। ईल्ड्स अगर और बढ़ रहे हैं तो समझो मार्केट, बॉन्ड मार्केट डू नॉट ट्रस्ट मिस्टर पॉवेल कि इन्फ्लेशन 2% आएगा, है ना। बॉन्ड मार्केट को भरोसा नहीं है पॉवेल की बातों पे। यील्ड्स बढ़ रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब कहीं ना कहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब रेट कट नहीं होंगे, रेट कट नहीं होंगे मतलब रेट्स हाई रहेंगे, रेट्स हाई रहेंगे तो ऑलरेडी 2 साल से तो हाई हैं, तो कहीं ना कहीं लंका लगेगी, और जैसे ही लंका लगेगी वैसे ही रेट कट होगा, और पैनिक में रेट कट होगा तो मार्केट कर जाएगा क्रैश, है ना, और बहुत सारे लोग बन जाएंगे करोड़पति। इलेक्शन बोलता था मैं, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लोगों को समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया, मीनिंग जब 90% लोग बोल रहे हैं हम सेबी से उल्टा चलते हैं, लर्निंग प्लस अर्निंग, तो देखेंगे जब वो टाइम आएगा स्टेप बाय स्टेप। बट बजट ने आपको ट्रेलर दे दिया, वो बजट बोल रहा हूँ, इलेक्शंस ने। एक दिन में ऑप्शन प्राइजेस 50-50 गुना हुए, 50 गुना हुए एक ही दिन में, मतलब समझ जाओ आप। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें मिस नहीं करना चाहिए। बजट का वेबिनार करना चाहिए, मयूर ज्वेलर्स, ठीक है बजट का करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है पिटाई होगी, और क्या होगा। अपना मार्केट थोड़ा सा अभी नशे में है इलेक्शन वाले, तो बस ये है कि या तो गिरेगा नहीं, और गिरेगा तो छोटा मोटा नहीं गिरेगा, फिर बड़ा ही गिरेगा। मोहिल रनपरा, हाउ टू लर्न
FX फ्रॉम बेसिक्स। फॉरेक्स, फॉरेक्स यार, अभी फॉरेक्स की तो मैं ज़्यादा बात करता ही नहीं हूँ। आपने कोई वीडियो देख लिया क्या मेरा पुराना? अभी बिटकॉइन इज़ ए गुड इंस्ट्रूमेंट। बिटकॉइन है ना, क्रिप्टोज बहुत वोलेटाइल होंगे यूएस इलेक्शंस में, तो इस पे ज़रा अपने हाथ जमा लो, ठीक है? जितना मौका निफ्टी ऑप्शंस में इंडियन इलेक्शन में था, उससे बड़ा मौका यूएस इलेक्शन में बिटकॉइन जैसा वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी आसान हो गई है अब। तो अगर ये बड़ा मौका था तो वो सोच लो आप कितना होगा। टाइम है उसमें नवंबर तक, लेकिन शुरू हो जाओ अभी से, ठीक है? तो पिंड कमेंट में इसका लिंक है, ज्वाइन कर लो। वेबिनार ऑन बजट सर जी, बजट बजट ज़्यादातर लोगों ने बजट की डिमांड की है। बिटकॉइन का कर सकते हैं बाद में, है ना? फिलहाल आई थिंक बजट ठीक है। ऑप्शन राइटिंग में अभी टाइम है, थोड़ा सा और रुक जाओ। अभी विक्स 14 आ गया है ना? ज़रा देख लेते हैं मार्केट के रंग ढंग। ऑप्शन राइटिंग तो जिंदाबाद है और रहेगा हमेशा ही, कभी भी कर लेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बढ़िया मौके दे रहा है मार्केट। अपना ये भी लाइफ टाइम लो के आसपास है रुपया, ये नहीं बढ़ रहा यार विक्स, लो पर एकदम। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4। देखो यार, टिकिंग टाइम बॉम्ब है ये। मैं बस इतना बोलूँगा सबको, मुझे नहीं पता भाई मार्केट में क्रैश कब आएगा, मैं इतना सबको बोलूँगा यार, आए तो मिस मत करना यार, है ना? नहीं तो अखर जाएगा बहुत। आपको पता है कॉल ऑप्शंस कभी इतना मल्टीप्लाई नहीं होते जितने पुट हो जाते हैं, ये एविडेंट है। पुट ऑप्शन 100 गुना भी हो सकते हैं, 200 गुना भी, 500 गुना भी। कॉल ऑप्शन धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना? मार्केट में कहावत है, जाता सीढ़ियों से और आता लिफ्ट से। लिफ्ट से आता है तो स्पीड में आता है, ऑप्शन को वही तो चाहिए होता है, ऑप्शन प्राइजेस को स्पीड। जब भी आए स्टॉक मार्केट क्रैश, मिस मत करना, है ना? मुझे नहीं पता कब आएगा, आई सीरियसली डोंट। 2 साल हो गए ये यील्ड कर्व इन्वर्टेड है ना? बीच में लगा कि पिछले साल 2023 में जब 2-4 बैंक डूबे यूएस में, तो लगा कि अब ये रिपीट हो सकता है 2008 का, लेकिन बैंक टर्म फंडिंग प्रोग्राम ले आए, है ना? बच गया, वहाँ पे बचा लिया इन्होंने। इसलिए बोल नहीं सकते इनका इंटरवेंशन होना बहुत है, और ऊपर से यूएस में इलेक्शंस हैं, हो सकता है 2025 में आए, लेकिन जब भी आए ना तो 100-200 गुना हो जाएंगे ऑप्शंस। मतलब 10-20-50 हज़ार 1 लाख में भी ट्रेड करते हो तो चांसेस रही कि करोड़ में पहुंच जाओगे। मार्केट क्रैश बना देता भाई बहुत लोगों को, बहुत बड़ा। बस ये है कि कल होगा, परसों होगा, इस हफ्ते होगा, इस महीने होगा, इस चक्कर में अगर पूरा सट्टा खेलते जाओगे ना तो पक्का आएगा तो सही, लेकिन आपको ख़त्म कर देगा। तो तरीके से है ना, पोजीशन साइजिंग ये सब, और जैसे जैसे मुझे सिग्नल्स मिलेंगे मैं बताऊंगा ही। मार्केट प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को भी, है ना? पावल खुद बोल रहा है अभी जब कुछ होगा तब हम रेट कट करेंगे। तो भाई जब पैनिक में कोई चीज़ की जाती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसमें सेंटिमेंट बिगड़ जाते हैं बुरी तरह। रेट कट जेरम पॉवेल ने किया था मार्च 2020 में, है ना? और सबसे बड़ा रेट कट था, एक साथ आई थिंक कितना 2% 3% ही कम, 2% कम कर दिया था रेट, जीरो पे ले आए थे। मार्केट इंस्टेंटली लोअर सर्किट, इतना भयानक पैनिक किया था। तो ये चीज़ें होंगी, ये तो यार इस लंका लग गई इसकी तो। ओ भाई, मेरी चांदी हो गई यार। कॉल राइटिंग तो आपके सामने ही लिया था मेनली यार, कॉल राइटिंग के यार पुट उठा लेना चाहिए थे यार, कुछ है तो सही पुट्स, लेकिन कॉल राइटिंग के ज़्यादा ट्रेड्स हैं। चलो ठीक है, बिटकॉइन है, कॉल राइटिंग ऑप्शन राइटिंग का ही मज़ा है, लेकिन जिस स्पीड में गिर रहा है मुझे लग रहा है 65,000 भी आ सकता है ना। अब ज़रा अगला देखते हैं, इसका अगला क्या सीन है। वाह क्या सीन है, इसको ज़रा कैल्कुलेटर चैनल पे देखा जाए और वर्ली पे देखा जाए। नीचे जाना चाहिए 67,000 तक, है ना? बड़े आराम से, जिस स्पीड में गिर रहा है बड़े आराम से। डेली पे देखें कहाँ तक का स्कोप है, इसमें काफ़ी स्कोप है, 64,000 65,000।
और टच करता है ना अगर, तो नीचे जरूर करता है। यहाँ किया था इसने अपर बैंड टच, उसके बाद से लोअर की तैयारी कर रहा है। मुझे लग रहा है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते 65,000 64,000 आराम से दिख सकता है। चलो भाई सही बैठे हैं अपन तो। फ्री फॉल है यार, फ्री फॉल। यूएस फिर भी थोड़ा बहुत रिकवर कर गए, तैयार ही नहीं है ये तो। चलो जो भी है। ठीक है यार, तो काम की बात आपको बताऊं, जब भी है मार्केट क्रैश, कब जब भी है 2024 2025, मिस मत करना है ना, मिस मत करना। आप लोग बड़े बन जाओ, है ना। इलेक्शन वाले तो बन ही गए हैं बड़े। अभी तो वेबिनार में कर रहा हूँ, तो जितने लोग वेबिनार में थे इलेक्शंस के, वो अब मेरा हर वेबिनार ज्वाइन करेंगे, इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ हर एक बंदा जो देख रहा है वो इतने पैसे कमा ले कि नॉलेज में खर्चा करने में कभी सोचना ना पड़े। क्यों भाई, है कि नहीं। एक्सिस माई इंडिया को थैंक्स बोलना बाकी है, क्योंकि मुझे 4 लाख प्रॉफिट कराया उस दिन। एक्सिस माई इंडिया आई थिंक बहुत रेयर लोग होंगे जो एग्जिट पोल पे क्लियरली बोल रहे थे कि मार्केट गिरेगा, है ना। क्लियर क्लियर एकदम, कोई फंड बट नहीं, ये सीन था एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल पे मैं बोल रहा था, मार्केट का एग्जिट पोल वीडियो बनाया था मैंने, मार्केट का एग्जिट पोल क्या है वो सुनो। यहाँ पर था ये कैलेंडर चैनल पे, ऊपर गैप अप क्रॉस करके, इजी मनी था ये, इजी, है ना। यहाँ पे जो ऑप्शंस खरीदे लोगों ने, 50-50 गुना 100-100 गुना हुए हैं अगले दिन ही। वो स्टॉक ऑप्शंस वाले वेबिनार में जो सिखाया था, ये सीन था भाई। वीडियो बना ही रहा था मैं। मार्केट का एग्जिट पोल क्या है वो सुनो। यहाँ तो गोदी मीडिया है, इसे छोड़ दो। लेकिन गोदी मीडिया अल्टीमेटली किसको खा गया, अंधभक्तों को, है ना। जो समझदार थे वो तो बना ले गए। तो मार्केट का एग्जिट पोल क्या था, जिस इलेक्शन वीक में जिस तरफ जा रहा है मार्केट, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन काउंटिंग डे पर उसी डायरेक्शन में जाएगा। काउंटिंग डे का तो पक्का ही था, वही हुआ है। अभी मार्केट फिर से मौका दे रहा है, मौका दे रहा है, तो 14 का विक्स आ गया, ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं वापस से, गुड, है ना। क्या दिक्कत है यार, ये इस तरह के सीधा ऊपर से इतनी स्पीड में, ये लास्ट टाइम कब गिरा था यार, ये यहाँ गिरा था, ये थर्ड टच करके ही गिरा था। नीचे बहुत गया था ये, कितना था यार स्विंग, ज़रा देखें इसको। बिटकॉइन में कितने लोग ट्रेड कर रहे हो, यस नो कमेंट करके बताओ ज़रा। कहाँ है यार ये नहीं, कितने पॉइंट गिरा था यहाँ से लेके यहाँ तक, 5%, 3,500 पॉइंट गिरा था। तो इसी को उठा के अगर इधर कर दें, यहाँ से रफली 66,000 के आसपास, 1,000 पॉइंट। ये देखो रेड में आ गया बिटकॉइन। बात कर ही रहे थे अपन, है ना। झटके देना शुरू कर दिए थे इसने स्पीच के दौरान ही। गिरेगा भाई, ये रुकेगा नहीं अभी, इतने फॉल देता है ये। हाँ कमेंट करके बताओ भाई, कितने लोग बिटकॉइन में बढ़िया ट्रेड कर रहे हो। यहाँ कितना फॉल दे दिया था इसने, यहाँ तक दिया था। ये भी लगभग 3,500 पॉइंट, है ना। यहाँ पर ये भी 3,500 पॉइंट, इतना ही देता है ये। यहाँ तक है ये 60,000 वगैरह था, देख लेता फिर भी।
यहाँ भी 3,500 पॉइंट, ठीक है। तो बस 66,000 पे फुल प्रॉफिट बुक, 66,500 वही कल्ट्रा चैनल का लोअर बैंड है के आसपास है। डन है भाई, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा है इसमें, बड़ी इंटेंसिटी के साथ गिरा है ये। 2 टावर हैं रेड, और 2 टावर रेड इधर भी थे, उसके बाद तो बस रेंज में ही हो गया। तो मेरे ख्याल से पुट राइटिंग के ट्रेड बनेंगे यहाँ पे 66,000 पे, और कॉल राइटिंग, बस यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करते रहो, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, रोज एक्सपायरी है। एनडीए की महाराष्ट्र में विकेट गिरेगी। हाँ यार, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, फ्लोर टेस्ट होना है इस गवर्नमेंट का, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होंगे सदन के अंदर इनको मेजोरिटी साबित करनी होगी अपने, और वहाँ पे अगर इनके सांसद पलट गए बीजेपी के या एनडीए के, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है ना, या कुछ भी हुआ, तो इस सदन के अंदर ये सरकार गिर सकती है। ये एक बड़ा रिस्क है, इस पर कोई बात कर नहीं रहा है। चांसेस इसके कम है क्योंकि सब ने अपना, लेकिन जिस तरह से मिनिस्ट्री बांट रहे हैं, ज़्यादा लोगों के हाथ में, ज़्यादातर लोगों के हाथ में झुंझुना ही मिला है, तो हो सकता है ये चांसेस हैं कि मतलब हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से लोग नाराज़ अगर होंगे तो एक ये भी आउटसाइड पॉसिबिलिटी है कि जून में फिर से कांड हो जाए। पता नहीं, मेरी तो मेन पोजीशन जुलाई की है, होगा तो होगा, लेकिन फ्लोर टेस्ट की कोई बात कर नहीं रहा है। फ्लोर टेस्ट होता है ना गवर्नमेंट का जब सेशन शुरू होते हैं पार्लियामेंट के। बिटकॉइन पे कर दिया सर, साइन अप नहीं हो रहा है डेल्टा, क्या इशू है भाई? मेल कर दो टीम को, वो लोग हेल्प कर देंगे। हेलो सर जी, बिग फैन फैन मनसुख वाघेला। बस भाई, प्यार है आप लोगों का। सर, लाख का करोड़ हो जाएगा तो पागल हो जाएंगे देख के। वो पागल हो जाओगे तो वापस मार्केट करोड़ ले लेगा वापस, और क्या। पागल ही तो नहीं होना है भाई। मैं तो अभी तो वेबिनार के सीरीज थी, अब सेशन में यही बोल रहा हूँ भाई, पागल मत होना ये पैसे से पैसा बनाना है ना, अफरीदी नहीं बनना है, धोनी बनना है। चलो यार, 1:30 बज गया है ना, 100-150 लोग तो, मैं रात के 4 बजे रहा हूँ तो भी रहते ही हो, है ना, झबरा फैन हो एकदम, एकदम पक्का उल्लू हो, पक्का उल्लू। ये निफ्टी नहीं गिर रहा है ना, गिफ्ट निफ्टी नहीं गिर रहा है। जापान देखे ज़रा, जापान भी ज़्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा बहुत गिरा है, रिकवर कर गया। तो डॉलर जो वीक है ना, उसका इम्पेक्ट है कि ग्लोबल ये जो इमर्जिंग मार्केट है ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। डॉलर भी रिकवर कर रहा है, लेकिन यहाँ से गिरना शुरू हुआ है 105 से लेके, ठीक है, सो ही पता चलेगी तस्वीर। क्या है भाई, ये क्या है भाई, छतरी बना दी है? डॉलर इंडेक्स बताओ, स्मॉल कैप जैसा तो चार्ट हो रहा है इसका भाई साहब, बड़ा खिलौना। और गोल्ड में मिडिल फिंगर बन रहा है, मिडिल फिंगर पैटर्न वॉल्यूम के साथ। भाई साहब, खेला हो रहा है कुछ तो बड़ा, है ना? देख रहे हो आप, देख रहा है विनोद, वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं जून में, देख रहा है विनोद? मिडिल फिंगर पैटर्न बन रहे हैं, और पंप एंड डंप से बड़ा भी बहुत था यार ये। ओवरऑल तो देखें इसको लार्जर टाइम फ्रेम पे तो बड़ा भी बहुत है। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम। चलो भाई, अपने बिटकॉइन लगाते हैं, बिटकॉइन देखने में मजा आता है। आय हाय हाय हाय, खूबसूरत खूबसूरत फिंगर फिंगर पैटर्न ही बन रहा है, कहीं नीचे वाली कहीं ऊपर वाली। देखो, बिटकॉइन मज़ा तो है यार, अलग मज़ा है ट्रेडिंग का बिटकॉइन में।
चलो भाई सोया जाए, है ना। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। और ये पिंड कमेंट में जो लिंक है रजिस्टर ज़रूर कर लो ना, बिटकॉइन से अपने आप को फेमिलियर करो, थोड़ा बहुत देखते रहोगे रोज़ रोज़, एक कंफर्टेबिलिटी आएगी ना। टाइम लगता है चीज़ों में, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज अकाउंट खोला आज से ट्रेडिंग शुरू, थोड़ा देखना शुरू कर दो, ऑर्डर कैसे डालते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो, है ना। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा ये ट्यूटोरियल्स उस पर, तो इसी में लगे हुए हैं अपने ही कामों दामों में। थोड़ा एक रेस्ट भी चाहिए यार मेरे को ना, 2 महीने बड़ी मेहनत की, कहीं तो कहीं हॉलीडे मार के आऊँगा यार। लेकिन अब बजट आ रहे हैं यार, और आप लोगों की फिर से डिमांड शुरू। सर्कल पुट होल्ड का क्या करना है, खुलते ही निकाल दें क्या? भाई कल पुट होल्ड में करना ये चाहिए, पोजीशन साइज औकात अनुसार रखनी चाहिए, औकात अनुसार, ताकि रात में ये ख्याल ना आए कि कल क्या हुआ, है ना। अभी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ कल, क्योंकि मेरा अभी बड़ा पोजीशन साइज है वो जुलाई में। कल विक्स 10% गिर जाए, कल निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन साइज कहाँ है बड़ा? जुलाई में। उसके बाद कहाँ? जून मंथली में। उसके बाद बड़ा कहाँ? जून वीकली में, मतलब अगले हफ्ते। उसके बाद फिर कल की एक्सपायरी, मतलब कम। और कल इंट्राडे कुछ लूँगा तो और भी कम पोजीशन साइज। तो भैया पोजीशन साइजिंग, तो अगर ऐसे ख्याल आपको आते हैं कल क्या होगा कल क्या होगा कल क्या होगा, तो गड़बड़ है यार, है ना। पोजीशन साइजिंग रखो। अब किसी के पास है ही 10,000 रुपये, वो क्या जुलाई करेगा और क्या जून करेगा? उसके लिए जो है वो कल है, हीरो या जीरो। भाई ट्रेडिंग बहुत टफ बिजनेस है, अगर छोटा पैसा है ना, कम पैसा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा दूर रहो। हाँ ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा, जैसे इलेक्शंस में था कि छोटा ट्रेडर बड़ा बन सकता, बन गए ना अभी तो, हेंस प्रूव्ड। 91% लोग बोल रहे हैं, है ना, पोल वोल किए हुए हैं सब। तो वैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी बजट में फिर से मिल सकती है जुलाई में। तो छोटे ट्रेडर्स को भी ये है कि जुलाई बजट बड़ा मौका रहेगा ना, तो वो देख सकते हो। बाकी एक वीकली वीकली एक्सपायरी करोगे, कल क्या होगा परसों क्या होगा, उससे कुछ ना होने वाला वाला। ठीक है, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, आपको खुश करने के लिए बोल सकता हूँ, अरे गिरेगा टेंशन ना लो, देखो बिटकॉइन देख के सब, अरे क्या फ़ायदा, खुश हो जाओगे, है ना। कल गाली देते हुआ कोई मतलब नहीं है। बिना दानी दारू पी के सोया मॉरिशस में। पड़ोसी हो क्या? पड़ोसी हो उसके। से गोल्ड क्यों इतना बढ़ रहा है? गोल्ड बढ़ चुका, अब तो गिर रहा है। मार्केट रिकवर, निफ्टी ऊपर, तो क्या पाताल लोक में घुसा देते हैं भाई। गिर गया ना 4 जून को, ऑप्शंस हो गए 50 गुना 100 गुना। अब आ जाए तो बड़े बड़े गिरे गिरे, जो करना करे। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, उसने लपक ली, उसने जोर की लपक ली। बाकी तो नंगा वियर तो लेट लतीफ घुसेगा और निफ्टी उसको ख़त्म करता रहेगा सिस्टमेटिकली, पीरियोडिकली। ठीक है यार, क्लोज करता हूँ, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे लाइव मार्केट कम्युनिटी पोस्ट में, है ना, मेंबर्स पोस्ट। सब लोग मेंबरशिप में ज़रूर रहो यार, है ना। इधर बजट भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जस्ट बिकॉज इंडिया विक्स वापस नीचे, और निफ्टी वापस कैल्टन चैनल के हाईस पे, टॉप पर, है ना। तो मौका है, मौका तो मार्केट दे रहा है भैया, दे रहा है कैल्टन चैनल। आप सब लोग देख सकते हो, अपने मन से तो बोल नहीं ना मैं, है ना। तो इधर ज़रूर हो, मैंने लिंक शेयर कर दी है, और पिंड कमेंट में बिटकॉइन में भी शुरू हो जाओ धीरे धीरे। वोट पे 300 लोगों ने वोट किया, और 39% मेजोरिटी ने बोला कि मूव डाउन। ज़्यादातर लोग सही बोलते हैं यहाँ पे, 23% लोगों ने रेंज बाउंड बोला था। नीचे ही आ रहा है ऐसे तो, है ना, नीचे ही बोलेंगे। हालांकि रुक गया, ये थम गया, गैप है, ये फिल करेगा, ये गैप फिल होना ही है, कल हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज पोवेल
चाचा को ज़्यादा गाली ना पड़े, इसलिए यहीं कहीं क्लोज करा के कल फ्यूचर्स रेड में और गैप डाउन के साथ कल गैप फिल ये वाला। तो मे बी अगर मुझे कुछ ट्रेड लेना है फ्राइडे की मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी में ले लूँगा कल ओपन होते से ही। अगर जैसा निफ्टी दिखा रहा है कि ठीक ठाक फ्लैटिश गैप अप होगा या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन जो भी है, ये गैप फिल हो जाना चाहिए कल। चलो भाई, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह 9 बजे पेट्रियन कम्युनिटी पोस्ट में और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। प्यार